Hey, hi everyone. Welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve CAT 2021 second slot and the last RC passage, RC4. Okay? All the other RC passages from CAT 22 as well as slot 3 and slot 2 of CAT 21 already done and uploaded in suitable playlists. Please go and check them out, solve the previous year questions so you get a good understanding of where you stand with respect to your prep. Anyway, without any further ado, let's go take a look what this previous year question is all about. Okay, so as usual, before we start solving, before I start explaining it, I would recommend that you pause the video here. Then I've also dropped the timestamps for the questions. Click on those timestamps, go solve the questions, jot down the answers, and then you can come back to any other point in the RC passage explanation to see whether your interpretation, whether your comprehension is on the mark or not. Okay, so chalo. Starting with the explanation, I hope that you have solved the passage on your own. Unlike other people, I tend to be very honest and very straightforward with you guys. Frankly speaking, nahi dekhna na ye video to mat dekho, load mat lo. Okay, the genre of the RC passage very straightforward. You can see it's actually hardcore philosophy. Okay, and the narrative, although readable, 3 short, decent paragraphs, but the topic of discussion वहां के वहां इतना घुमाया है बातों बातों में author ने. So कहीं ना कहीं I really suspect whoever said this as a question for the exam, very likely he or she was messing with the aspirant. ये देखने के लिए कि कौन पागल aspirant आता है और इसमें फंसता है. Okay, with due respect to anybody who got 4 on 4 in this, but honestly speaking, नहीं करने होते ऐसे passages for the vast majority of aspirants. I mean, if my experience is not wrong, 95% aspirants ने ऐसे passages को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए एग्जाम. ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे इसे कोशिश करके देखो. Try to read, try to comprehend, watch the video to check whether your comprehension was in line with what it should be, and then you can go through the questions with a curious bent of mind. But कहीं पर भी I would not recommend कि इसको दिल पे लो, इसको seriously लो, use it as a barometer of sorts to check your preparedness. No, होता है once a while you come across passages like this जो बहुत ही unpleasant होते हैं और जिनमें आप 1 on 4 निकालो या 4 on 4 निकालो, वो कहीं पर भी एक सॉलिड निशानी नहीं है with respect to what percentile you will get in the exam of this section. Okay, passages like this are sort of outliers as far as my outlook goes. Okay, but please keep in mind this is my personal opinion. You can have something completely opposite of it and it's fine. Okay, do not take my word as objective truth. ठीक है, चलो पैसेज पे आते हैं. Step by step, I'll explain. 3 paragraphs we'll take a look at in 3 different measures. The first part is relatively easy to understand. Okay, what does it say? कि भैया नॉलेज पकड़ के देखते हैं. ठीक है, एज ह्यूमन बीइंग्स हमको बहुत गर्व है ना हमारे नॉलेज के ऊपर में. तो फिलोसोफर्स कहते हैं कि डूड व्हाट इज नॉलेज. हाँ, इतना क्या आपको गर्व है? व्हाट इफ इमेजिन अ सिचुएशन कि हमें सिर्फ लगता है दैट वी हैव नॉलेज बट वी डू नॉट हैव नॉलेज एट ऑल. वेट अ मिनट, व्हाट? ठीक है, ठीक, वेट वेट अ मिनट. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉलेज मींस. तो बेसिक आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हैविंग ऑब्जेक्टिव ट्रुथ आइडिया अबाउट समथिंग, नोइंग ऑब्जेक्टिव ट्रुथ अबाउट समथिंग. ठीक है जी, चलो एक्सेप्टेबल है. समथिंग ग्राउंडेड इन फैक्ट्स, समथिंग ग्राउंडेड इन फिगर्स, टैंजिबल इंफॉर्मेशन जो वैरी नहीं होगी इंसान टू इंसान. नॉलेज को क्या कहेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड वुड, लकड़ा देते हैं. हाँ, नॉलेज एकदम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है. यू गो अराउंड द वर्ल्ड, एवरीबडी विल अग्री टू दिस. यू विल हैव टू मीट एन इंसान पर्सन हु डिसएग्री विद दिस. ओके, तो फिलोसोफर्स क्या कहते हैं? अच्छा जी, ओके, ठीक है, बट हाउ कैन यू प्रूव टू मी, फिलोसोफर सेज, कि द नॉलेज दैट यू हैव, how can you prove to me that it is completely distinct from, let's say, other things like your opinion, okay, superstition, या फिर क्या आप हवा में ही महल बांध रहे हो? इज इट अ ड्रीम, इज इट अ फैंटेसी दैट यू हैव? हाउ कैन यू प्रूव टू मी a proper solid difference between the two? And as long as you cannot prove to me knowledge ka separate distinction from these 2 3 other things, then what the fuck are we doing in our lives? अगर आप मुझे ये 2 चीजों के बीच का डिफरेंस अच्छे से नहीं बता सकते, तो whenever we are boarding a plane, whenever I'm going to the doctor getting some medicines, hey Bhagwan, what am I doing? I'm not proceeding with my life based on objective truth.
I am working, I am going along with somebody's opinion or even superstition for that matter of fact. And that is why where the author has labeled it as irrational and unjustifiable. ये सारी हमारी डेली एक्टिविटीज, ठीक है? क्यों? क्योंकि फिलोसोफर कहता है यार तुमने तो मुझे प्रूफ करके नहीं बताया हाउ योर नॉलेज अबाउट समथिंग is 100% different and distinct from, let us say, just having some random opinion. कुछ टेस्ट होना चाहिए ना, where you can say yes, yes, okay, so and so thing that I know is solid hard truth, solid hard knowledge. It is not my opinion. ऑथर सेज, फिलोसोफर सेज कि देखो बॉस ये ना इतना आसान नहीं है प्रूव करना, और अगर जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते तो आई एम गोइंग टू मिक्स एंड मैच दिस टू थिंग्स एंड आई एम क्वेश्चनिंग माय एंटायर लाइफ नाउ. What the f are we doing in this world? Whatever we are doing is irrational and unjustifiable. हे भगवान. ओके, तो एज यू कैन सी फिलोसोफर्स थोड़े से खाली पीली लोग रहते हैं यार. पर्सनल रिमार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बट है दिस दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैरा इज टॉकिंग. ओके, दैट इज व्हाई एज अ पर्सनल आउटलुक मुझे नहीं अच्छे लगते फिलोसॉफी वाले पैसेजेस. दे टेंड टू मेस विथ योर माइंड एंड barely any value addition. But ठीक है, anyway, let's not try to get personal here. Let's not get personal biases in. Our job is to crack the RC passage and that's it. End the story then and there. So first paragraph बहुत simple है. Philosopher is raising a question कि knowledge भैया can be an illusion. Knowledge is possibly an illusion. So let's jot it down over here so that we can come back to it. We can refer to it. Knowledge is probably an illusion. और आप बोलोगे अभी कि कैसे, क्या इल्यूजन, कुछ भी बातें करते हो क्या, हाउ इज दिस? तो सेकंड पैराग्राफ को लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. बट बिफोर दैट, अ वेरी ऑनेस्ट डिस्क्लेमर, आई एम नो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस थिंग. दूर दूर तक आई एम नोवेयर नियर अ फिलोसोफर गाय. तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकंड पैराग्राफ कैन बी फ्लॉड. So please handle whatever I'm going to tell you with a pinch of salt. ठीक है? I would be very very glad if somebody can actually prove to me कि मेरा interpretation 100% गलत है. Something else has to be the right interpretation. If you are one of those people, please, you are welcome to share your opinion. Till then, allow me this fake right to peddle my ज्ञान on a public platform like this. ठीक है? क्या कहते हैं? तो imagine करो ये वाली situation. Okay, so this is my interpretation of what the second paragraph is talking about. Let's say that you are at your home chilling around, okay, and you have a philosopher friend, maybe living in some other part of the town or maybe a differently entire town. ठीक है, चलो, and that guy calls you up. Imagine करो that you two are on a call right now on a mobile phone call. ठीक है. By the way, I know that I have drawn this philosopher guy, your friend, as a shaitan here, as a Satan of sort. जो ये स्टोरी सुनने के बाद ना आप भी अग्री करोगे कि यस, ये शैतान वाली बातें करता है. Anyway, coming back to the story, let's say your philosopher friend, okay, खुद तो जॉबलेस है ही, आपको भी अब सताना चाहता है. What does he tell you? कि बॉस, go to your room and look at your table and tell me what do you see. Tell me the reality of that table. Okay, आप थोड़े से बोर होकर रूम में गए and you see that there is a brown table in your room, there is a book lying over it like this. ठीक है जी, okay. So on your call, you tell your friend that, okay, boss, my table is brown in color. It has 4 legs, okay, and there is a book right now lying on that table. अच्छा, ठीक है. Your philosopher friend says, okay, you can see the table. You say yes. Can you touch the table? Oh yes. अच्छा, ठीक है. चलो. तो philosopher friend अब आपको बोलता है कि दोस्त अब एक काम कर. You are like, what man? तो he tells you कि एक काम कर भाई, आजा दूसरे रूम में आजा. Close the door behind you and come outside the room. आर लाइक अ बिट पिस्ड ऑफ यार, मतलब ये क्या कर रहा है, ये बोर मत कर यार. बट स्टिल अब दोस्त है, सुनना तो पड़ेगा. तो यू आर लाइक कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एंड देन यू कम आउटसाइड द रूम एंड आस्क योर फिलोसोफर फ्रेंड कि बोल क्या हुआ, व्हाट नाउ. तो ये फिलोसोफर फ्रेंड इज लाइक, नाउ डिस्क्राइब द टेबल टू. तो यू आर लाइक, अभी तो बताया द टेबल हैज 4 legs, the table is brown in color, the table has a book lying on its top. Philosopher guy is like, no boss, wait, is that the reality of your table? You are like, yes. So philosopher guy is like, lol bro, no, not possible. बिल्कुल नहीं हो सकता. Why you ask him, why is this not possible? So this is what a philosopher guy says, friend says कि देख boss, you cannot perceive the table with your perception ना. मतलब कि आपके जो 5 senses है, eyes, ears, sense of touch, ठीक है, ये सारे
जो हमारे 5 सेंसेस है, आपके उन 5 सेंसेस के बियॉन्ड है ये टेबल अभी? ओके, यू आर लाइक यस, यस, ओके. So in this case, author is highlighting this, philosopher is saying this, that because this table is independent of your perception, you cannot see it, you cannot touch it, you cannot do anything about it right now. And still you are telling me that boss, this table has 4 legs and brown in color. तो गलत बात. For all you know, ऐसा भी हो सकता है that when you have come out of the room, the table is now standing on only 2 legs and with the remaining 2 legs it is dancing in the air. Holy smokes, it has thrown away this book. हट, चलो डांस करते हैं. And maybe it is dancing around. Only when you go back to the room, then it goes back to its civilized state, like 4 legs, brown color. आ जा भाई किताब मेरे ऊपर. You are like, निकल निकल यहाँ से, जल्दी निकल, पागल मत कर. But your philosopher friend is like, देख देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ that if your definition of reality is something कि जैसा आंखों के सामने है वैसा ही मेरे पीठ पीछे भी है, something, the state of something like it is in front of, using my perception, in front of my eyes, in front of my ears, the way I perceive it, behind my back when I cannot perceive it, तब भी अगर आपको रियलिटी वही लगता है तो आप गलत हो. दिस इज व्हाट फिलोसोफर सेज कि आंखों के सामने जो है वो रियलिटी लगती है, ठीक है, बट पीठ पीछे भी वही आपको रियलिटी अगर लगती है तो योर डेफिनेशन ऑफ रियलिटी इज फ्लॉड. Your definition of reality, your understanding of reality is flawed, is wrong. This is what the philosopher says. मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का कोई आइडिया ही नहीं. ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं पता तो नॉलेज नहीं पता, और नॉलेज नहीं तो आ गई ना बात वापस, that whatever we do in our life is irrational and unjustifiable. How can you prove to me that something is hardcore strong knowledge? ठीक है, तो कहीं ना कहीं the author of this passage tried to insert humor over here. Skeptic in the sense, skeptic and philosopher. Skeptic मतलब somebody who raises doubts, somebody who raises queries about something. Okay, so in this case, the philosopher and the skeptic is the same. So author has tried to insert a kind of humor by saying rattling loudly over here. Where is this rattling coming from? Because author ने यहाँ पे वो skeleton वाला metaphor use किया है ना. Skeleton in closet मतलब छुपे हुए राज. Okay, English saying है, let's not delve deeper into it. It simply means that it is some inconvenient truth that you have hidden away. Okay, secrets about yourself that you have hidden away. तो author says कि ये skeleton, जिसको हम हिंदी में कंकाल कहते हैं, ये आवाज करता है बहुत. Okay, bones when just together, pieced together, make a lot of noise actually. Okay, तो author says ये philosopher भी ये skeleton की तरह बहुत आवाज करेगा और आपको पूछेगा कि ए बॉस, how can you be sure that this table is the same thing behind your back and in front of your eyes? कैसे कैसे कैसे? And before running away, because you now want to beat the shit out of this philosopher guy, he may add, boss, if this is the way you conceive knowledge, if this is the way you think reality is, then तुम गधे हो बहुत बड़े, and then runs away. This is the gist of second paragraph. थोड़ा complicated है, I know, not a very fun ride, but अब इसके ऊपर क्वेश्चन है तो ऐसा समझना तो जरूरी है. So all in all, rounding off the discussion once again, that if your knowledge of reality is something which is beyond your perception, which is beyond your ability to conceive, understand something, तो आपका definition of reality, आपका definition of knowledge गलत है. और ये कहाँ से हमें पता चला? तो I am highlighting those part for you. Let's use a different color. Okay, the skeptic is saying, what boss now? That reality is outside our ken. Ken मतलब ये बारबी वाला कैन नहीं, कैन मतलब your zone of perception, your zone of being able to detect it. तो ऐसे केस में we have no way to compare हमारी mental image of that table, mental representation मतलब mental image of that table, with the actual reality of that table behind your back. कि सच में वो तब 4 पैरों पे ही है टेबल आपके बाहर निकलने के बाद रूम में भी, तो ये तो हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते. तो therefore we have no way of understanding whether our reality, whether our definition of reality is correct or incorrect. तो ज्यादा ही सोचते हैं यार फिलोसोफर, नहीं, but this is what the passage says. And because of this, rounding off the discussion once again, your understanding of knowledge is flawed. ठीक है, so this rounds off the second passage. Now coming to the last paragraph, now I would recommend कि ये जो चित्रकला मैंने की है स्क्रीन पे, आप ये जॉट डाउन कर लो if you want to. I'll have to clear it out in
a few moments anyway. Going ahead, ऑथर कहता है अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे यार। तो बहुत सारे तरीके हैं। ऑथर सेज इन द थर्ड पैराग्राफ नाउ, सबसे बेहतरीन, मोस्ट पीपल इस चीज को इग्नोर ही मार देते, लोड ही नहीं लेते लाइफ में। फिलोसोफर ऐसी बड़बड़ कर रहा है, करने दो, हम चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट डू वी डू रादर इज टू थिंग्स, कि वी होल्ड आवर बिलीव्स कॉन्फिडेंटली। अच्छा, and what is this confidence based on, what is this confidence founded upon? I'll underline it, दो फैक्टर्स के ऊपर में, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अक्वायर्ड इट, हमारा सोर्स क्या था। ओके, मे बी न्यूज में सुना, मे बी दोस्त ने बोला, मे बी हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक बोलती है, वगैरह वगैरह। एंड हाउ ब्रॉडली, हाउ स्ट्रांगली इट इज शेयर्ड बाय रेलेवेंट पीपल। मतलब भाई सब लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, मेरा पूरा समाज बोलता है, मेरी पूरी फैमिली बोलती है, तो कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन दैट, यू विल बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग समथिंग, ठीक है। एंड देन कम्स द सेकेंड हाफ ऑफ द नैरेटिव, कि आपका जो नॉलेज है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, अब आपको अगर डिफेंड करना है उसे, लेट्स से आई कम एंड अटैक सम नॉलेज ऑफ योर्स, सम बिलीफ ऑफ योर्स, हाउ विल यू डिफेंड इट? यू विल डिफेंड इट प्रीटी रिगरसली, बट दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट। कौन से दो फैक्टर्स? सबसे पहले, व्हाट इज एट स्टेक फॉर यू, आपका क्या दाव पे है, पहले आप वो देखोगे। एंड सेकेंडली, आपके पास क्या रिसोर्सेस है टू डिफेंड योर ओन ओपिनियन, वो आप देखोगे। एग्जाम्पल, इफ आई कम टू यू एंड टेल यू तुम एक नंबर के गधे हो, तुम एक नंबर के पागल हो, तो यू विल जंप टू योर ओन डिफेंस वेरी स्ट्रांगली, because what is at stake is your own reputation, right? But let's say I come and tell you, यार जस्टिन ट्रूडो कितना बड़ा गधा है, कनाडा का पीएम, ओके, तो then you might be like, ठीक है, maybe you will try to defend him, maybe you might not try at all, okay? क्यों? क्योंकि आपकी इमेज थोड़ी दाव पे। अगर जस्टिन ट्रूडो आपका कोई नहीं लगता, इफ यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब और कनाडा, तो देन यू माइट बी लाइक कि हाँ ठीक है यार, होगा, गधा होगा, बोल रहा है गधा, बोलने, तो यू विल नॉट कम टू द डिफेंस ऑफ दैट गाय, बिकॉज हार्डली एनीथिंग इज एट स्टेक। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर में हमारी दो चीजें डिपेंड करती है। वन, कॉन्फिडेंस इन योर ओन नैरेटिव, लेट्स jot it down very quickly. Whenever I look my own drawings, I am like, यार मजनू भाई का रोल काश मुझे मिल जाता वेलकम में, डोंट यू थिंक? ओके, कॉन्फिडेंस इन समथिंग एंड डिफेंडिंग समथिंग। ओके, तो डिफेंड हम दो फैक्टर्स के ऊपर करते हैं। व्हाट आर दोस? फर्स्ट ऑफ ऑल, you check what is at stake, and secondly you check what resources you have to defend yourself, to defend your opinion, and what decides, what influences the amount of confidence you have in your own belief. Author has stated over here in blue, I've underlined it in blue, आपका source, how you acquired that knowledge, how you acquired that belief, and secondly, how widely it is held, how popular it is, whatever you believe in, ठीक है। पूरा समाज बिलीव करता है, तो यू विल ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ए बिलीफ। इफ 100 पीपल डोंट बिलीव इन इट, ओनली यू आर द वन हु बिलीव्स इन समथिंग इन योर फ्रेंड सर्कल, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द थर्ड पैरा मेंशंस। तो राउंडिंग ऑफ द पैसेज वंस अगेन, फिलोसोफर्स रेज अ डाउट कि भैया नॉलेज क्या है। मे बी वी आर ऑल लिविंग अंडर द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, when in fact there is no knowledge possible, only opinions and superstitions. एंड क्यों ऐसा? क्योंकि रियलिटी की जो हमारी डेफिनेशन है वो गलत है, बहुत कुछ हो सकती है, ओके, नॉट वेरी श्योर, बट दे आर सेइंग इट इज वेरी लाइकली कि हम गलत है। एंड हाउ डू वी डील विद दिस सिचुएशन? ऑथर सेज एज कॉमन पब्लिक, एक तो हम लोड नहीं लेते, और दूसरा, वॉट एवर वी बिलीव, we feel confident about it regarding as far as the source is good, many people believe in that thing. And secondly, if somebody comes and attacks it, so how do we defend it? So we take a look at what's at stake for us, and secondly, what resources do we have to defend ourselves. That's it, okay? So with that, let's go and try to attack the questions now. I would recommend that you pause the video here, jot down whatever is written on the screen, so that you can relate to the explanation that we'll be going through, okay? Please do not forget to like and subscribe to the channel. If you like our content, it works as a great encouragement if you can comment, if you can share it with your friends. ठीक है, चलो, let's go and take a look at the questions now.
Okay, first question. This particular sentence author wants to talk about in the question कि इस sentence में जो बोला गया है, what can be a correct interpretation of it? Okay, so let's highlight it using some different color. This part is the question talking about. That टेबल वाला एनालॉजी दिखाया था ना आपको, वो वाला चीज कि अगर आपने नजर पलटा दी, अगर आपके 5 सेंसेस के बियॉन्ड वो जा चुका है, तो फिर कैसा रियलिटी भाई? फिर तो शायद आप जो परसीव करते हो, आप जो पीठ पीछे सोचते हो कि मेरा टेबल 4 पैरों वाला ब्राउन ब्राउन कलर का बड़ा प्यारा, तो आपकी ये आइडिया गलत हो सकती है। ओके, so what is being implied by the sentence which is asked in the question? It is this option A. if the reality of things is independent of a perception, मतलब आपके 5 senses के beyond अगर वो जा चुकी है वो चीज, and even then you believe in that reality, तो logically the philosopher says कि नहीं, you cannot perceive what actual reality is. तुम मन से definition दे रहे हो reality, ठीक है? I know very very गोल 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 ऐसी खिचड़ी हो रही है शब्दों की वहां के वहां, but yes, that's philosophy for you boys and girls. Coming to the next option B, actually this could have been the answer. The only problem is that it has focused on eyesight only. यहाँ पर जो eyes वाला दिया है ना, corner of a eyes, please keep in mind this is just an example. Okay, literally he does not mean only eyes. What he means is सारा का सारा आपका perception का ability, eyes है, ears है, sense of touch, sense of smell वगैरह, ठीक है? तो उस बेसिस के ऊपर में ऑप्शन ए इज फार बेटर राउंडेड बिकॉज इट यूजेस द वर्ड आ परसेप्शन व्हिच कैप्चर्स ऑल दीज 4 5 6 सेंसेस व्हाटएवर। बी के अंदर में ओनली फोकसिंग ऑन आईसाइट, इसलिए बेचारा इट लूजेस द गेम, ठीक है? एंड एनीवे यहाँ पर देखो बहुत बड़ा गंदा सा वर्ड प्ले हो गया है, वी कैन नॉट परसीव आ परसेप्शन, ये गलत हो गया। यहाँ पे रियलिटी होता तो थोड़ा सही तो भी होता था सेंटेंस में, ठीक है? Coming to option C, why it is not the answer? Our knowledge of reality floats above our perception of it. Knowledge of reality, this knowledge of should have been cut. हमारी reality या फिर हमारी definition of reality floats above subjective perception. I am not going to delve deeper into it now. Explain करने गया तो 10 मिनट हम ये ऑप्शन ही डिस्कस करते रह जाएंगे, because insane amount of word play is going on. ठीक है? Maybe this is also partially my fault because I'm not a subject matter expert here. I wish I could make it easier for you, but please accept this is to the best of my abilities. I'm trying to put it before you. Maybe you are able to follow me, maybe you are not. So really pardon for that. So I hope that you got the answer to this question using that analogy of table that we went through. If any doubts, please drop it in the comment section. I'll try to help you out. Tab tak ke, let's go take a look at the next question. Chalo. Author is most likely to support which of the following statements? Okay. Answer has to be answer C, option C. स्कैंडल ऑफ फिलोसॉफी क्या है? क्या ऐसा कांड हो गया, क्या स्कैंडल हो गया, क्या भंडा फूट गया? दैट वी माइट नॉट नो एनीथिंग एट ऑल, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है परसेप्शन का, रियलिटी का, ट्रुथ का, नॉलेज का, ये फ्लॉड हो सकता है। वो टेबल वाला एनालॉजी विच आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू, आपका फिलोसोफर फ्रेंड लाफिंग एट यू कि बॉस योर नॉलेज ऑफ रियलिटी इज फ्लॉड, सो दैट इज समथिंग ऑथर आल्सो एग्रीज विद ऑप्शन सी, ठीक है? Option B comes really close to being the answer. Second half is where it collapses. The skeptic, the philosopher, is not making this recommendation anywhere. ठीक है? इसके पहले जो first half है up to descriptions from for the skeptic up to description, that is all right. But second half of option B is nowhere implied in the passage. तो हम बोल नहीं सकते whether the author will support it or not. ठीक है? ऑप्शन ए एंड डी यू कैन रिजेक्ट काफी हद तक के। फॉर एग्जांपल ए में प्रॉब्लम क्या हो गई? इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द ट्रूथ। रिकॉल दैट शॉर्ट नोट दैट वी मेंट एट द एंड ऑफ थर्ड पैराग्राफ। हमारा कॉन्फिडेंस किस में डिपेंड करता है? रिगार्डिंग हमारा सोर्स एंड हाउ मेनी पीपल होल्ड दैट ओपिनियन। रेफर टू दिस ब्लू हाईलाइटेड पार्ट, ठीक है? तो यू विल सी दैट दिस इन गलत है, रादर डिपेंडेंट होना चाहिए था। नाउ ऑप्शन ए इज स्टेटमेंट इज ट्रू, but of course it does not say dependent, it says independent, hence not the answer, ठीक है? So I hope that you understood the discussion going on here. Still, if any doubts, please drop it in the comment section, I'll help you out. Option C remains the answer for this question. And now let's go to the third one now.
Okay. According to the last paragraph of the passage, अच्छा, we hold our beliefs and presumptive knowledges confidently वाला aspect depending on blah 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 something. तो ये something क्या है? कौन से factors पे हमारा confidence depend करता है? Very easy to answer. Easiest question out of all four as far as this passage is concerned. Please refer to your note. Our confidence depends on what? हमारा source, and secondly how many people believe in it. Answer option C. ठीक है? ऑप्शन बी गलती से मार्क नहीं करना. ऑप्शन बी इज फॉर हाउ स्ट्रांगली वी डिफेंड आवर ओपिनियंस, एंड ऑप्शन सी इज फॉर हाउ स्ट्रांगली वी बिलीव, हाउ स्ट्रांगली वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ओन ओपिनियन ऑफ आवर ओन नॉलेज. एक्चुअली ओपिनियन गलत वर्ड है, ऑफ आवर ओन नॉलेज. ठीक है, तो चलो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटाबेस क्वेश्चन. वंस अगेन आंसर ऑप्शन सी ओवर हियर. Moving to the last question now. Let's hope the nightmare gets over quickly. And the fourth question is here. ठीक है, author discusses all of the following in the passage except, मतलब कि 3 पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑथर बोलता है पैसेज, एक बात वो नहीं बोलता है. ठीक है, randomly picking up option C. Philosophers maintain that the scandal of philosophy should be of concern to everybody. Is it mentioned? Is it mentioned? Yes. It is given over here. Let's highlight it. कहाँ गया? Yes. Philosophers point out that it should matter to everyone. What? The scandal. The scandal should matter to everyone. So yes, option C is given in the passage. We can infer it. We can discuss it out. All right. Option A. Skeptics believe that we can never fully know anything. अगर हमारा knowing, अगर हमारा reality का definition is independent of perception. Yes, वो टेबल वाला analogy कि आप रूम के बाहर आ गए और उसके बाद भी कह रहे हो कि मेरा टेबल ब्राउन, मेरा टेबल पैर 4 पैर का, तो गलत. Yes, philosophers say call it galat. So option A, yes, discussed in the passage. Coming to option B right now, if we cannot distinguish knowledge from opinion or delusion, we will not be able to justify action. Definitely, last sentence of first para. वो पढ़ना है आपको पार्ट. हमने शुरुआत में डिस्कस किया था that philosophers say कि अगर नॉलेज को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सके ओपिनियन सुपरस्टिशन से, तो our entire lives are a lie. What the hell are we doing with our lives? Everything is irrational and just unjustifiable. So yes, we will not be able to justify, not justify, unjustifiable, 100% discussed in the passage. Bye bro. Answer has to be option B. Simple the actually question. Why? Because of this qualifier, unnecessary qualifier used here. Best way to deal with skepticism is to ignore it. No, author says ignore करते हैं हम, ये most popular तरीका है. Okay, most common thing what people do is simply ignore what philosophers are saying regarding this knowledge scandal. कहीं पर भी author ये नहीं कह रहा है कि अरे बॉस आप ignore कर रहे हो ना, बेस्ट बहुत अच्छा किया. No, he is not supporting it. He is just describing to us that boss देखो, ignorance is the most popular way people deal with this situation. So option B, unnecessary qualifier used there best, hence it is the answer here. And with that, I hope that you understood the discussion, understood the passage, whatever we are talking about. Okay? Thanks a lot for watching up to here. If you like the content, please like, share, subscribe, share it with your friends. Thanks a lot for supporting me till now. A lot of very positive comments have come my way. Very grateful for those. Please keep on supporting. Please study really well. Exam is very close. Tab tak ke, take care, tata, bye bye, and I'll see you in the next one.